Hello, I welcome you all to my Ghar Bete UPSC channel. After my initial videos on UPSC 2023 prelims paper and looking at the response which I received, I'm yet again coming with another important video which is very less discussed. That is on the UPSC essay papers. And if you look at the marks of the toppers from this year's list, you will observe a trend that many of the toppers, in spite of coming in the list, have scored less marks in the essay paper as compared to the average score which I have observed over the past few years. I am Kedar Kulkarni, your friend, your mentor through this Ghar Bete UPSC channel. I have been a mentor for 7+ years for various UPSC exams and especially UPSC civil services. And this is my honest, humble initiative to help you all crack UPSC from the comforts of your home. So if I move on to the next slide, I will show you the reason why I have come up with this video. This is a mark sheet which is available readily on many of the social media channels and platforms. So I've just borrowed this list from those platforms. If you look at the toppers' marks in essays, so the third column is for rank and the last column is for essay marks, right? So it's not arranged in a chronological order of rank. It's just whatever information was available in that sequence, it has been arranged. But our focus is only on this column that is of essay marks. So it's a roughly an average of 50 candidates, which is here. If you look at the rank 3, Uma Harita, she has scored brilliantly in all other GS papers, maybe even in her personality test. But she somehow couldn't get beyond 120 plus in essay, which is still I would say an average score. And if you and Uma is just one of the examples. If you look at the scores of many other toppers in the list, they have scored an average between 100 to 120, which is a kind of a dip in terms of the average UPSC marks as compared to the previous years. Yes, there have been great exceptions. Smriti Mishra, 145, Rahul Srivastava, 142. Many others have scored even above 125, 130, which is also a good score. Anything above 125, I would say, is a good score. 130 plus is again a decent score, and 140 plus is an excellent score in essay writing. So there are many who you see who have scored good rank, 21, 23, and they have scored decent amount of marks in essay paper. Right? You might have seen Vasant's interview on my YouTube channel, who consistently has scored above 130. Even in his previous attempt, he scored 139. And in this attempt, he scored 132, which is still a decent score. Vasant, whom I had the opportunity to mentor during the past 2 years of his preparation. Secondly, if you look at other toppers also, they have scored a bit less as compared to the previous year's average UPSC essay marks, which I have seen. Now, why do I say that essay is always a rank decider or a rank breaker also? Right? So this is just a kind of an example I would place in front of you, where many of the toppers, even those who have come beyond 200, 300, 400, 500, 600 rank, even many of them could have scored excellent if they would have been in the range of 130 plus or 125 plus in the essay paper. So does that mean कि इस साल का पेपर बहुत tough था? I won't say that, because as compared to the previous year's essay paper, this year you had many options where you could have written a lot of things in a decent way, provided you have practiced a lot. Based on my interaction with many toppers, I have come to one conclusion, that there are some areas which, the toppers or those who gave mains but who couldn't clear or get eligible for the interview might have messed up with some of the important issues while writing an essay. तो उसमें से क्या हो सकता है कि जैसे I'll take the example of this topic. One of the most chosen topic of 2022 was forest are the best case studies for economic excellence. And I say this based on the interaction of various mentees or various aspirants who have given this 2022 prelims. Now, as soon as you see this topic, forests are the best case studies for economic excellence. तो इसमें होता क्या है कि many people correlate the importance of forest
with the economic importance it has in our lives. ये बहुत लोगों ने सबसे बड़ी गलती की है इस टॉपिक को डाइसेक्ट करने के लिए. तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया, उन्होंने तुरंत स्टार्ट किया फॉरेस्ट का डेफिनेशन लिख दिया, राइट. फॉरेस्ट ऐसा होता है, ये होता है, इट इज इकोसिस्टम व्हिच हैज ऑल द नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स इन इट, right. It provides that with fresh water, food, air, and the economic importance of forest is from timber, the forest based produce. टॉपिक को बिना समझे ही आप जब ब्रेनस्टॉर्म करना लगते हो तो that is a first major drawback or the issue which toppers or many of the people who have scored less in this year's paper might have. So forest is just one example I'm giving. This topic is just one of the examples. Right? There are 7 more topics in this paper, but I'll just try to explain with the help of one topic because other topics I have already discussed in many of my mentorship sessions. I'll try to upload the sessions as well for the benefit of all those who are not able to join those mentorship sessions, right? Because I don't want to sell any course here. I just want to make education democratized, and for those who cannot afford these big institution fees which provide you with a lot of material but not much substance, as I say, and I'll explain why. Secondly, whenever you choose a topic, you need to be very cool headed or level headed, right? When the question paper is placed in front of you, I know the blood pressure is rising high, anxiety levels are high because it's the very first paper. Essay paper is always the first paper in your GS or your mains answer writing, right? So I understand. Even I have gone through the similar ups and downs when I used to give my mains examination. It's fine. But once you cool yourself and calm yourself, it is very important to look at all the 4 topics. And based on your preparation, based on your practice, you choose a topic on which you have a lot of content. Many times there are people who give essay paper in their regional medium, English, Hindi, Marathi, or any other regional medium which they want to give. So for them, I would suggest कि आप इसका एक बार translation जो हिंदी में रहता है. Now sadly UPSC translates it only into Hindi, right? You have English and Hindi, right? So even for those who are attempting in English medium, for them also I always recommend for all these years कि अगर आपको टॉपिक कितना भी सिंपल क्यों ना लगे, आप उसका एक बार हिंदी मीडियम का जो ट्रांसलेशन होता है वो भी देख लीजिए. Why? Because there are sometimes many words which have double meaning, right? Like for example, I already explained during my previous mentorship sessions that there was an essay in 2017-16 that if development is not engendered, it is engendered. Okay, pardon my writing here. This speed of this cursor is giving me some problem. So, if development is not engendered, it becomes endangered. Now, if you look at the Hindi translation of 2017 essay paper, engendered का मतलब सही दिया था वहां पर, that is स्त्री पुरुष समानता. लेकिन जो हिंदी इंग्लिश मीडियम से थे, they considered the meaning of engendered as to give. There is one more meaning of engendered in English dictionary, that is to give. So they thought that if development is not given to people, then it will come under threat. And possible है ये भी मीनिंग हो सकता है, लेकिन हिंदी में क्लियरली दिया था स्त्री पुरुष समानता, राइट. तो इसलिए हिंदी ट्रांसलेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट टू बी एक्स्ट्रा श्योर दैट द मीनिंग यू हैव अंडरस्टूड इन इंग्लिश is the same which is there in the Hindi translation. Okay, that is the first tip I would always recommend. Sometimes Hindi translation is also very dangerous, I understand, but at least it will give you a cross check or a double check to be sure about the meaning you have understood. तो अगर meaning understood है, well begun is half done, I would say, right? तो इसमें क्या expected था कि forest से inspiration लेके हम हमारे economic models में क्या सीख सकते हैं, right? For example, forests have a lot of diversity, right? So and they also have the vulnerable sections. Forest also have some weaker sections. Similarly, in economic model, we have weaker sections of the society, right? So we can use the forest ecosystems as an example
to explain our understanding of our economic models in the present day system. Like in India, we have a welfare system. Right? In welfare system, we ensure that the most vulnerable sections of the society are taken care of. Like we have seen in the COVID, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज दिया था, या इतने सारे अंत्योदय schemes है. You have प्रधानमंत्री फसल बीमा for the farmers, for the old age you have pension scheme, and so on and so forth, right? Women, etc., etc. So that is one of the case in point. Secondly, forests always try to ensure homeostasis, that is a balance. Similarly, in economy, through our monetary and fiscal policy, we try to maintain a balanced economic growth through our fiscal and monetary policy so that inflation is not high, right? And employment is also ensured and the growth rate doesn't drop down. फॉरेस्ट के अंदर एक और हम सीख सकते हैं कोऑपरेशन, राइट? मेनी स्पीशीज कोऑपरेट विथ वन अनदर, राइट, फॉर द सर्वाइवल. सिमिलरली इन इकोनॉमिक मॉडल्स वी हैव सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कोऑपरेशन के ऊपर काम करते हैं. कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज होते हैं, राइट, CHS. देन नाउ वी हैव आल्सो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन फॉर द सेम रीजन. सो ऐसे टाइप के कुछ एग्जाम्पल जो हम फॉरेस्ट से सीखते हैं और जो हम हमारे डे टू डे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंश्योर करते हैं, ऐसे टाइप के एग्जाम्पल देके आपको इसको एलैबोरेट करना था, राइट? आई डोंट वांट टू मेक दिस सेशन lengthy because I'll keep a separate session for discussing all of these topics, right? So I'll just come to few more observations which I have seen, why they might have scored less. So ये तो देख लिया हमने, not understanding the nature of topic and its requirement. So that's where essay paper becomes a swing paper because you just have to write two essays. उसमें से एक भी आपका गलत हो गया तो आपका जो 125 मार्क्स में से आपको कुछ 40-50 ही मिल सकते हैं या उससे भी कम, जैसे इस साल बहुत लोगों को मिले. तो इफ यू हैवंट अंडरस्टूड द नेचर ऑफ द टॉपिक, दैट इज वेयर हाफ ऑफ योर मार्क्स विल गो अवे, राइट? और अगर दोनों का भी आपको टॉपिक नहीं समझे तो और ही प्रॉब्लम है. सो दैट्स वेयर एसे पेपर बिकम्स स्विंग पेपर. इफ टॉपिक इज अंडरस्टूड, then many of them start writing it in a myopic way. Myopic way means क्या, कि बहुत ही short sighted, बहुत ही limited उनका world view रहता है, right? They will only stick to Indian examples. They won't give an international example, right? They will only stick to male examples, right? I always say write your essay in a gender neutral way. अगर मेल एग्जाम्पल दे रहे हो तो अगर पॉसिबल तो फीमेल एग्जाम्पल्स भी देना चाहिए डेफिनेटली, राइट? और ट्रांसजेंडर एग्जाम्पल ऑल्सो फॉर दैट रीजन. ओके, सो ऑलवेज हैव अ 360 डिग्री व्यू, राइट? इसके अंदर हिस्टोरिकल होगा, इकोनॉमिक बैकग्राउंड होगा, एनवायरमेंटल बैकग्राउंड होगा, सोशल बैकग्राउंड होगा. एंड सिंस यू ऑल आर सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स, आल्सो ट्राई टू इन्वॉल्व governance examples, right, wherever possible. Don't try to force fit them, but try to add them. Sometimes you give a lot of examples which is not expected, right? Examples देने चाहिए, but बहुत ज्यादा example भी देके आप ऐसे को बर्बाद कर देते हो. और जो लोग एग्जाम्पल देते हैं तो उसको सब्सटैंशिएट भी नहीं करते, बस एग्जाम्पल देके छोड़ देते हैं कि एग्जामिनर को समझ जाएगा कि मुझे क्या कहना है. ऐसा नहीं होता है. Many of the toppers who came to me after who secured a less rank 200 300 400 के बाद में, तो उन्होंने कहा कि सर हम कहाँ गलत हुए, हमने तो इतने सारे बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस के ये लगाए, उसके अंदर तो हमें ये स्ट्रेटेजी बताया गया, we tried to use the same strategy but still we couldn't go above 120. Right? The reason is because you wrote the examples but they couldn't substantiate it with the values or solid conclusion, right? Or any kind of lessons we learn from those examples which are related to the topic at hand, right? So that you need to give it with solid, constructive and solution oriented arguments in your essay, because an essay is always an argumentative essay. It is unlike a GS paper where you just write point number 1 2 3 4 and you write the conclusion. ऐसा essay paper नहीं होता. It is a reflection of your personality, right? आपका originality check किया जाता है. बहुत सारे लोग इसलिए ऐसे को बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, इतने सारे स्ट्रेटेजीज ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, टॉपर्स के अलग अलग मेथोडोलॉजी होते हैं. सी टॉपर्स से आपने जरूर सीखना चाहिए, बट डोंट ट्राई टू कॉपी देम ब्लाइंडली. हैव योर ओन यूनिक वे ऑफ राइटिंग एंड ट्राई टू ब्लेंड द टॉपर्स वे ऑफ राइटिंग इनटू योर ओन स्टाइल, राइट, व्हिच सूट्स यू द बेस्ट. ओके, ऑल्सो डोंट मेक योर एसे वेरी जेनरिक लाइक यू राइटिंग जीएस पेपर्स. ये बहुत लोगों का प्रेजेंटेशन भी एकदम शाबी रहता है. You don't have paragraphs, ठीक से अंडरलाइन भी नहीं करते की पॉइंट्स को, राइट? या बहुत सारा ऐसे 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 ऐसे
रब करके या उन्होंने रब कर दिया है, तो ऐसा मत करना। तो दैट इज, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई वुड से यू नीड टू कीप इन माइंड। ओके, कुछ लोग होते हैं जो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से आते हैं या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से आते हैं, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। उनको लगता है दो तीन ऐसे सॉल्व कर लिया और थोड़ा प्रीवियस ईयर का ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लिया, कुछ ऐसे घर बैठे यूपीएससी जैसे बहुत सारे वीडियोस देख लिए, तो चलो हो गया काम, बस इससे आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ठीक? यहाँ पर मैं हमेशा स्पोर्ट्स पर्सन की एग्जाम्पल देता हूँ। वाई? यू हैव सीन विराट कोहली, यू हैव सीन धोनी, यू हैव सीन ऑल द ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन इन द वर्ल्ड। In spite of the fact that they have reached greatness, every day they show up and practice hard, right? 10-10 साल, 12-12 साल क्रिकेट खेल के भी वो हर दिन प्रैक्टिस आते हैं, करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। इवन आई एज अ मेंटोर, आई विल नेवर से कि यहाँ पे जैसे लिखा है मेरे को सब आता है, राइट? आई एम एन एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। इवन आफ्टर mentoring all so many students for all these years, many of my articles have been published in many of the magazines. Still I would say I'm a student, right? ये मेरे घर बैठे यूपीएससी का मोटो ही है, विद्या विनय न शुभत है। जितना आप हम्बल, जितना आप एक स्टूडेंट बनकर सीखोगे, एंड यू हैव अ डिसिप्लिन प्रैक्टिस फॉर राइटिंग एसेज एंड गेटिंग इट चेक फ्रॉम एनी मेंटर। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे से मेंटर, आपको जो सही लगता है मेंटर करने के लिए आप उससे मेंटरशिप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू कम टू मेंटरशिप ओनली टू, एब्सोल्युटली नॉट, राइट? सेकेंडली, आई हैव सीन जो लोग इंग्लिश मीडियम से होते हैं, जिनका वोकेबुलरी बहुत अच्छा डेवलप हुआ है, वो शशि थरूर टाइप ऑफ लैंग्वेज लिखने जाते हैं। बिल्कुल नहीं, यू हैव टू कीप योर एसे इन द मोस्ट सिंपलेस्ट ऑफ लैंग्वेज एंड सिंपलेस्ट ऑफ वे ऑफ राइटिंग, right? So if you look at Vasant, whom I had the opportunity to give some kind of mentorship, if you visit his Telegram channel, or if you visit Smriti Mishra's Telegram channel, yeah, or any other टॉपर का टेलीग्राम चैनल आप देखो, तो उनका वे ऑफ राइटिंग बहुत ही सिंपल होता है, राइट? जो सामने वाले को इजीली समझ में आएगा, एंड एट द सेम टाइम दे ट्राई टू इंश्योर वेरी यूनिक पॉइंट्स, वेरी यूनिक फिलोसॉफीज which give justice to their essay writing, right? So इसलिए don't become a Shashi Tharoor unless and until you want to become an author or a great writer, तो वो आपको expected नहीं है। You don't want to write a PhD level of essay, लेकिन आप उसको ग्रेजुएशन लेवल के ऐसे के लेवल पर भी मत लेके आओ। फिर बहुत लोग एकदम बेसिक लिखते हैं कि एकदम छोटे छोटे डिटेल्स देने लग जाते हैं, तो वो भी नहीं करना है। सो नेक्स्ट जाते हैं हम। एक और बड़ा प्रॉब्लम मैंने यूट्यूब के ऊपर और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के थ्रू देखा है, राइट? देयर आर मेनी इंस्टीट्यूट्स व्हिच सेल यू कोर्सेज वर्थ thousands and thousands of rupees, and they give you so many dangerous strategies, right? So therefore I added a old phrase here: too many cooks spoil the broth. इतने सारे स्ट्रैटेजी, इतने सारे काइंड ऑफ अलग अलग कोचिंग मटेरियल, और इतना सारा लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं लिखने के लिए। मेरा आपसे यही सजेशन होगा: think simple, write simple. Look at the toppers answer writing sheets as an example, right? And just try to take the gist out of it. Just like how a honeybee takes honey from the flowers, वैसे आपको बनना है, राइट? तो मल्टीपल स्ट्रैटेजीज को फॉलो मत करो, जो आपको स्ट्रैटेजी सही लगता है आप उसको फॉलो कीजिए, और बेसिक्स सारे सेम होने वाले, राइट? यू लाइक 360 डिग्री एनालिसिस ऑफ द टॉपिक, राइट? कीपिंग इट सिंपल, कोई अच्छा कोट रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव टू मेक योर एसेज फ्लो लाइक यू रीड एन आर्टिकल इन एनी न्यूज़पेपर और स्टोरी बुक, right? And you should be relevant to the topic and make it a variety, right? Just like all the topics are covered into that: economics, environmental, etc., etc. And always follow the KISS principle, right? Keep it simple, silly, right? So वो जो KISS principle हम गवर्नेंस में यूज करते हैं, वही आपको ऐसे में भी रखना है। अब लोग पूछते हैं कि सर कहाँ से पढ़े ऐसे राइटिंग के लिए? तो आपका जीएस तो इट विल ऑलवेज एक्ट एज अ बेस। GS4 ethics paper will act as a base for your philosophical essays. Read Indian Express, read The Hindu, read योजना एंड कुरुक्षेत्र, स्पेशली योजना। योजना के जो वे ऑफ राइटिंग है या पीआईबी आर्टिकल्स का जो वे ऑफ राइटिंग है, दैट इज व्हाट यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग यू टू राइट, राइट? सो देयरफॉर दैट इज अ हिडन जेम। नॉट मेनी ऑफ यू विल टेल यू कि आप योजना से लिखो। मैंने कितने सारे एस्पिरेंट्स को योजना के थ्रू ही गाइड किया है, योजना के प्रीफेस से, योजना के आर्टिकल से, बिकॉज दैट इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग, right? So don't go after heavy books or yes, you can read Dr. Kalam's book. I always recommend to read Dr. APJ Abdul Kalam's book because his way of writing is very connecting, very simple,
and very effective. And he is a repository of knowledge of science, technology, philosophy, right, culture, and so many things, right? So I always recommend to रीड इज बुक्स फॉर ऐसे राइटिंग. बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, आपको जो सही लगता है आप उसको फॉलो कीजिए, फिलोसफी को समझने के लिए, ऐसे राइटिंग को समझने के लिए, कोई बात नहीं. बट माई ओनली रिक्वेस्ट टू यू इज प्लीज प्रैक्टिस एंड गेट इट चेक्ड फ्रॉम अ गुड मेंटोर हु विल शेप योर ऐसे. ऐसे राइटिंग इज ऑलवेज लाइक प्लांटिंग अ ट्री, राइट? आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको एक महीने में या 2 महीने में आपको एक एक जेके राउलिंग के लेवल का आप ऐसे लिखोगे या बुक लिखोगे. एब्सोल्युटली नॉट. तो इसलिए स्टे अवे फ्रॉम दोज क्रैश कोर्सेज जो आपको पता है ना 15 दिन में सीखो ऐसे राइटिंग. इट नेवर हैपेंस अनलेस एंड अनटिल यू हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट ड्यूरिंग योर स्कूल डेज और कॉलेज डेज. तो पॉसिबल है कि आप अच्छे से इमीडिएटली लिखना स्टार्ट कर सकते हो. बट जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है इतने सारे एस्पिरेंट्स को गाइड करने में, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स, उससे भी ज्यादा, they after their 10th or 11th or 12th examination they are never used to writing an essay. So it will take a lot of time. आपको शायद you will throw many of the essays in the dustbin, first few of your essays, right? It's fine, it is a process you will have to go through. But once you have gone through that drill, you will come out with flying colors and you will start writing better. Therefore I always say the more you set in practice, the less you bleed in war, right? If you have any doubt regarding essay writing or gs answer writing for that reason, feel free to reach out to me. You can follow our YouTube channels and Telegram channel. So for more updates, and I always say keep calm and write the essay. Essay writing should not be a pressurizing tactic, right? It should always be something which you enjoy thoroughly because you have understood the topic well and you are enjoying writing it as well. Okay? So make essay writing an enjoying process, and please follow us on our Telegram channel, YouTube channel, where I upload many important insights which are not shared on other platforms. And for those who many other coaching institutes charge you a lot for such sharing similar tips, but I'm sharing it to you free because I want to help all those who are unable to afford the coaching fees, and I want to democratize this education of UPSC and mentorship, so that even those sitting in the remote part of India or remote part of the world who's preparing for UPSC would find it more easier, and I can help you one step uh, ahead to get cracking into this UPSC examination. And if you have found this video useful, please like it, share it, comment. It will at least act as an inspiration and as a mirror for me also. You are really enjoying it, and I can come up with more such important and insightful and informative videos for you in the future. So thank you so much. See you very soon.